વિરમગામ તાલુકાના ઓગણ ગામ પાસે આવેલા અપના ઘર આશ્રમમાં પીડિત માનવ સેવાના પાવન તીર્થનો સેવા કાર્યોનો પ્રારંભ। અપના ઘરમાં આશ્રમ વિરમગામ એક અનેરા અદ્ભુત સેવા મંદિરની સ્થાપના MP બિરલા આશ્રમાલય માધવ પ્રસાદ પ્રિય વંદના બિરલા એક્સપેર્ટ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા 100 બેડની સંપૂર્ણ સુવિધા સાથે આશ્રમ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં જાહેર સ્થળ ઉપર બિનવારસી તરીકે તેમજ દર્દનાક બીમાર હાલતમાં અશક્ત અવસ્થામાં જીવતા વ્યક્તિઓને આ આશ્રમમાં લાવીને અહીં સાફ સુથરા હાલતમાં જીવનભર સંપૂર્ણ ફ્રી સેવા કરવામાં આવશે અને આ સર્વેની પ્રભુજીના સંબોધન સાથે ઓળખવામાં આવશે। આ માટે હેલ્પલાઇન નંબર 90-230-56-474 ઉપર ફોન કરવાથી આશ્રમના સેવકો આવીને જે વ્યક્તિ હોય તેમને લઈને આશ્રમમાં દાખલ કરી દેશે અને ત્યાં તેમની સેવા કરવામાં આવશે। સમગ્ર ભારત તથા નેપાળમાં કુલ 59થી વધારે અપના ઘરમાં આશ્રમમાં આવેલા છે અને જેનું સમગ્ર સફળ સુંદર રીતે સંચાલન મા માધુરી વ્રજવારીસ સેવા સદન ભરતપુર રાજસ્થાન દ્વારા કરવામાં આવે છે, જેમાં 6200થી વધુ પ્રભુજન તથા 2200થી વધારે ગાય રાખવામાં આવે છે, જેમાં બીમાર પશુ પક્ષીઓની પણ સારવાર કરવામાં આવે છે। ઉલ્લેખનીય છે કે અપના ઘર આશ્રમ વિરમગામ ઓગણનો એક અનેરું સેવા અદ્ભુત સેવા મંદિરની સ્થાપના કરીને વિસ્તારમાં અશક્ત અને નિરાધાર તેમજ બીમારીઓથી પીડાતા લોકો માટે સેવા તેમજ રહેવા માટેની સુવિધા સાથે તમામ લોકોની સેવા કરવામાં આવશે। स्टार्ट। मेरा नाम शैलेंद्र त्यागी है। अपना घर आश्रम भरतपुर जो संस्था माँ माधुरी ब्रिजवारी सेवा सदन है, जो पिछले लगभग 22 सालों से असहाय लावारिस प्रभु जी, जिनका दुनिया में कोई नहीं होता, जो सड़कों पे पड़े रहते हैं असहाय अवस्था में, उनके लिए इस आश्रम की शुरुआत जो MP बिरला आश्रमालय के नाम से माधव प्रसाद प्रिय वंदा बिरला एपेक्स चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा इस भवन का निर्माण किया गया है, जो ऐसे लोगों के लिए कार्य करेगी जो सड़कों पे, रेलवे स्टेशनों पे, धार्मिक स्थानों पे असहाय अवस्था में पड़े रहते हैं, जिनको घायल होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं, जो जिनके कई दफ़ा शरीर में कीड़े भी पड़ जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए इस आश्रम का भवन का निर्माण किया गया है और ऐसे लोगों को इस आश्रम में लाकर उनकी सेवा की जाएगी। इस आश्रम का जो उद्देश्य है, विचारधारा है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति सेवा और संसाधन और उपचार के अभाव में सड़कों पर दम न तोड़े, और इस आश्रम की जो संचालन व्यवस्था रहेगी वो माँ माधुरी ब्रिजवारी सेवा सदन अपना घर संस्था भरतपुर के द्वारा की जाएगी। और जो भवन का निर्माण किया गया है, जैसा मैंने पहले बताया है, माधव प्रसाद प्रियवंदा एपेक्स चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा इसका भवन का निर्माण किया गया है। और ये चार्ज कैसे होगा यहाँ पे? हाँ, ये संस्था जन सहयोग के माध्यम से सभी प्रभु जी, जिनको हम प्रभु जी बोलते हैं, यहाँ पर जिनको लाते हैं उनको हम प्रभु जी से कह के संबोधित करते हैं, क्योंकि हमारा मानना ये है कि कोई भी व्यक्ति है, मानव जो है, उसके अंदर ईश्वर का वास है और हम मानव की सेवा माधव सेवा करके मानते हैं। और ये आश्रम जन सहयोग के द्वारा निःशुल्क इसमें सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जिसमें रहना, खाना, भोजन, चिकित्सा आदि सब जन सहयोग के माध्यम से निःशुल्क कराया जाता है। अच्छा, 24 घंटा? हाँ, 24 घंटे कोई यहीं पर रहते हैं। 100 बेड की इस आश्रम की कैपेसिटी है और ऐसे लोगों को यहाँ पर लाकर यहीं रखते हैं, और यदि वो ठीक होने के बाद में अपने घर का पता बताते हैं तो उनको घर भिजवाने की व्यवस्था भी की जाती है। वेरी गुड। स्पॉन्सरशिप किसका है ये आपका? ये आश्रम जो है वो बिरला जो इनका माधव प्रसाद प्रियवंदा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा इस भवन का निर्माण किया गया है और जन सहयोग के माध्यम से माँ माधुरी ब्रिजवारी सेवा सदन इसका संचालन करेगी। अच्छी बात। મારું નામ ગાંડાભાઈ પટેલ, अपना घर आश्रम मुक्ता प्रेसिडेंट। अपना घर आश्रम मुक्ता એ 2019થી એ કાર્યરત છે। अपना घर आश्रम माँ माधुरी व्रजवारीस सेवा सदन अपना घर आश्रम ना नेजा हेठळ अमारो गुजरात में सौथी प्रथम आश्रम ये अपना घर आश्रम मुक्ता है। आज लगभग 66 જેટલા પ્રભુજીઓ अपना घर आश्रम में सेवाओं लाभ लई रह्या छे। आज જ્યારે વિરમગામનો अपना घर आश्रम शुरू थाय छे त्यारे अमो अमारा आश्रममांथी
21 પ્રભુજીઓને અહીં વિરમગામ અપનાગર આશ્રમમાં લાવીને આ આશ્રમની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ધન્યવાદ.